So you finally decided to start your fitness journey, but आप sure नहीं है कि exactly क्या करना है. Then you've come to the right place. तो fitness start करने के आपके 3 motivations हो सकते हैं. First, you want to lose weight. Second, you want to gain weight. Or third, you want to maintain your body weight but gain a better physique. तो इन तीनों के specifics में जाने के पहले we'll talk about some common things that you should do when you hit the gym. Number 1 is weight training. Weight training means training your muscles with the help of weights such as dumbbells, machines, and different types of equipments that you see in the gym. Weight training is very important when it comes to muscle building, and you should train each of your muscle at least twice a week. Then comes cardio. So what is exactly cardio? Any exercise जो आपका heart rate normal से ज़्यादा elevate कर देती है, that is called as cardio. For example, swimming, cycling, running, or even walking on a treadmill or skipping rope. Cardio is very important for our heart health, and week में 150 minutes of cardio or 20 to 25 minutes of cardio is recommended in a day. You can choose to split your cardio workout every day or in a week according to your convenience and suitability of time, but make sure that you don't skip it. Number 3 is diet. So diet is very important whether you want to gain weight or lose weight, or even want to maintain the same weight range. Diet में भी सबसे important है protein intake. A lot of our Indian diets is filled with carbs and fats, and we don't talk enough about protein. So a normal person who does not go to the gym or is not actively engaged in any kind of physical activity, उनके लिए recommended dosage of protein is 1 gram per kg of their body weight. बट वंस यू हैव स्टार्टेड योर फिटनेस जर्नी और आप जिम जाना स्टार्ट करते हैं या कार्डियो शुरू करते हैं या इंटेंस वर्कआउट में इन्वॉल्व होते हैं, देन योर रिकमेंडेड प्रोटीन इनटेक इज एटलीस्ट 1.5 ग्राम per kg of your body weight. If you want to lose weight, then your target protein intake should be 1.5 gram per kg of your ideal or target body weight. So these are the 3 important things that you should do regardless of your motivation. That is, hit the gym, go to the weight section, build muscles, do cardio, keep your heart healthy. And number 3, eat healthy. Now we'll talk about your individual goals. So let's start with losing weight. Weight loss में सबसे important है your calorie intake and calorie deficit. So let's first understand calorie deficit actually क्या होता है. Calorie means the energy that you get from food, and deficit means shortfall or shortage. And the formula for calorie deficit is calorie intake minus calorie expenditure. दिन भर में जो भी फूड इनटेक हम करते हैं उससे हम कैलोरी इनटेक करते हैं. वी एक्सपेंड द सेम कैलोरी थ्रू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, गोइंग टू द जिम और स्विमिंग और रनिंग. यहाँ हम अपनी कैलोरी स्पेंड करते हैं. तो वेट लूज करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में होना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर आपकी कैलोरी इनटेक से ज़्यादा हो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स से मिस्टर एक्स वांट्स टू लूज वेट. अभी उनका प्रेजेंट कैलोरी इनटेक है 2000 किलो कैलोरी पर डे, बट अब उनको वेट लूज करने के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि उन्हें 2000 किलो कैलोरी से कम इंटेक करना होगा. फूड के टर्म्स में बात करें तो अगर वो दिन में 4 चपातीज खाते हैं तो उन्हें अब उसे कम करके 2 या 3 करना पड़ेगा. सिमिलरली, अगर उनका डेली इंटेक है 2 bowl ऑफ राइस, देन ही हैज टू कट इट डाउन टू 1 और 1.5 bowl ऑफ राइस पर डे. बट सिर्फ फूड के थ्रू ही आप कैलोरी डेफिसिट नहीं कर सकते. अगर आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं तो उससे भी कैलोरी डेफिसिट होता है. So there are 2 ways in which you can remain in calorie deficit. Number 1, either you eat less, or number 2, you increase your physical exercise levels. And of course, the obvious thing is if you do both, then you will lose much more calories and your ideal weight or your target goal will be achieved much sooner. But be cautious. In calorie deficit, less is more. जितना धीरे धीरे आप कैलोरी डेफिसिट करोगे वो उतना ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगा. अगर आप एक दिन में ही ये सारे रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश करोगे, then you'll suffer and this might lead to your failure. So make sure that you're not overburdening yourself with calorie deficit and you're taking this slowly. Next हम बात करेंगे weight gain करने की. Let's take an example of Miss K. Miss K को weight gain करने के लिए calorie surplus में जाना होगा. Calorie surplus is just opposite of calorie deficit. यहाँ आपको अपनी current calorie intake से ज़्यादा कैलोरी खानी पड़ेगी. से मिस के प्रेजेंटली 1200 किलो कैलोरीज पर डे खाती हैं, तो अब उसे उन्हें बढ़ा के 1500 to 2000 या 1800 डिपेंडिंग ऑन हर गोल चेंज करना होगा. फूड के टर्म्स में बात करें तो अगेन अगर वो अभी 2 चपाती खाती है तो उन्हें उसे बढ़ाकर 2 या 3 या 4 करना होगा. 1 bowl ऑफ राइस को 1.5 to 2 में कन्वर्ट करना होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी. इफ यू डोंट वांट टू चेंज योर वेट
बट वांट अ बिट बेटर फिजिक, देन व्हाट शुड यू डू? इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पर ही रहें। जो आप अभी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं उसे ही कंटिन्यू रखें, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं। And along with muscle training and cardio, if you continue to do so for at least 3-4 months, you start seeing the results. So that is it for this video. Please feel free to drop a comment and I will try to address all of them. And please let me know if you want to know about other topics and I will try to create video on them. See you in the next one.